So we had to start with gravitational potential energy today. So the potential energy of a body at a given position is defined as the energy stored in the body while bringing it from the position of zero potential energy to that position. So basically क्या है, work done in bringing a object from infinity to a point was known as potential, gravitational potential of that at that point. And the energy stored, जो वर्क डन करेंगे वो कहाँ जाएगा, एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. तो वो जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है ना, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट ए गिवन पोजीशन इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी while bringing it from position of zero potential energy. Zero potential energy कहाँ पे था, इंफिनिटी पे था. तो ब्रिंगिंग इट फ्रॉम द जीरो पोटेंशियल एनर्जी टू दैट पोजीशन, उस दौरान जो एनर्जी स्टोर हुआ उस ऑब्जेक्ट में, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, लेट्स से इस पॉइंट पे ला रहे हैं, इंफिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आ रहे हैं जिसका मास m है, तो उसको लाने में जितना एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुआ, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो when the body is at infinity with respect to another body, the gravitational attraction on the body is zero. Then the potential energy of the body is zero, which is called zero level of potential energy. So potential energy at infinity, gravitational potential energy. So gravitational potential energy at infinity will be equal to zero. So if the position of a body changes on account of the forces acting on it, then change in its potential energy is equal to amount of work done on the body by the forces acting on it. For the given change in the position, now as this work done is independent of the path followed, so the gravitational forces are conservative forces. So basically क्या, if the position of the body changes on account of the forces acting on it, then change in its potential energy is equal to amount of work done on the body by the forces acting on it. So amount of work done by the forces is the change in potential energy for the given change in position. So as this work done is independent of path followed, हमें पता है कि gravitational जो फोर्स है के द्वारा जो वर्क डन होता है, उसके उसके हेल्प से जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, एंड दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस. Gravitational potential energy of a body at a given point is the gravitational field of another body in a gravitational field of another body is defined as the amount of work done in bringing the given body from infinity to that point without acceleration. So this we have discussed पहले भी. तो ये basically आपका definition हो गया कि gravitational potential energy of a body at a point in the gravitational field of another body. So potential energy of a body at a point due to gravitational field of another body. तो जैसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कोई लेकर आ रहे हैं इधर, तो ये वी आर ब्रिंगिंग इट इनसाइड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सम अदर बॉडी. सो दैट्स व्हाट इज रिटन, यू नो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट in a gravitational field of another body is defined as the amount of work done in bringing the given body from infinity to that point without acceleration. Now, expression for gravitational potential energy, we have to derive the formula for gravitational potential energy. So, consider a gravitational field due to Earth of mass m and radius r. The mass of the Earth can be supposed to be concentrated at its center O. Now, let us calculate the gravitational potential energy of the body of mass small m placed at point P
in the gravitational field where OP is equal to small r, where r is greater than capital R. So for example, आप अर्थ का मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर रहे हैं और एक आर डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास स्मॉल एम है आप लेके आ रहे हैं, इसका मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, टोटल मास एम है, इसका रेडियस आर है यहाँ तक, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इससे, दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर, राइट. So join OP and produce it onwards. Take 2 points A and B on this line such that OA is equal to X and AB is equal to DX. तो 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट X ले लेते हैं और दूसरा यहाँ से ये B तक लेके आते हैं DX. तो इसको हम लोग पिछले क्लास में भी ऐसा ही एक हम लोग डेरिवेशन किए थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की. सो ये डिस्टेंस dx है a से लेके b तक, और o से लेके a तक का जो डिस्टेंस है दिस इज x. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी एट a विल बी g by x square. सो बिकॉज यहाँ टोटल मास m है और ये स्मॉल m है एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, राइट, बाय अ डिस्टेंस. लेट्स से यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके आए, a पॉइंट पे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो g by x square, जब m को खिसका के हम a तक लेके आ गए, उस समय जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट इज g by x square. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. फोर्स g by x square है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे, राइट. सो g by x square into dx, right. Now total work done in bringing the body from infinity to point P is given by, so work done in bringing from infinity to point P. Point P कितने distance पे है? R distance पे है. तो work done will be equal to ये जो small amount of work done है g by x square dx, यहाँ dx missing है, right? वो infinity से R तक. So this is equal to g by r square. So when you integrate this gmm by x square dx from infinity to r, so this will be gmm is constant बाहर आ जाएगा और x square डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, x to the power -2 dx हो गया. x to the power -2 का जो कोई भी x raised to the power 2 का जो इंटीग्रेशन होता है x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1, x cube by 3 हो जाएगा. x to the power -2 plus 1 by -2 plus 1 करेंगे तो x to the power -2 plus 1 होता है x to the power -1, और यहाँ पे नेगेटिव साइन एक आएगा तो माइनस gmm by इंटू 1/x इंफिनिटी से r. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस gmm, अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इंफिनिटी. 1/इंफिनिटी जो है तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? माइनस gmm by r हो गया. सो दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P. Now, since this work done is stored in the body as its gravitational potential energy U, therefore gravitational potential energy of the body of mass m placed at point P in the gravitational field of Earth of mass capital M at distance r will be minus gmm by r. So, ये जो work done है, this is stored as potential energy, right? And that potential energy will be equal to again minus gmm by r. So work done is minus gmm by r, and this work done is stored as gravitational potential energy. So you can equate both of them. And we also note that this gravitational potential energy is gravitational potential into mass of the object which we are bringing from infinity to that point. So gravitational potential energy is gravitational potential into mass of the body.
So this is known as gravitational potential energy. Okay, so I'll just now relation between gravitational potential and gravitational field. तो अब अगर हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में रिलेशन निकालना है, so consider 2 points A and B. So let's say we have 2 points A and B, distance dr apart in a uniform gravitational field of intensity I. So let the direction of I be along AB. Gravitational force on the particle of mass m placed at B will be F is equal to mass into gravitational intensity. तो जो इंटेंसिटी है उससे मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को फोर्स निकल जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. Now work done by the gravitational force for the displacement of the particle from B to A, that is displacement कितना है, dr के बराबर हमने देखा, they are at a distance dr apart. So this is equal to, so this will be equal to dw is equal to F dot dr. So work done is equal to force into displacement होता है. Now so this is equal to F dot dr. तो F हमारा m into I है तो m I dr हो जाएगा. अब I dot dr को I dr cos 180 डिग्री है ना, क्योंकि इंटेंसिटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इंटेंसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को. So, A और B के बीच में था तो हम लोग इधर मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट. और जो इंटेंसिटी था वो A से B के तरफ था, राइट. अलोंग ए बी था और इधर हम लोग बी ए के अलोंग इसको मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, इसीलिए cos 180 डिग्री यूज किया. तो माइनस आई डी आर माइनस एम आई डी आर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, वर्क डन. और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डीवी इज वर्क डन पर यूनिट मास. सो वर्क डन इज माइनस, सो माइनस एम आई डी आर को एम से डिवाइड कर देंगे, माइनस आई डी आर हो जाएगा. आई इज माइनस डी वी बाई डी आर. तो ये हमारा जो वैल्यू है इसको डी आर को इस तरफ लेके चले जाएंगे तो हमारा इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा. तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है दैट इज माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आई इज इक्वल टू ये माइनस डी वी बाई डी आर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. So here dV by dr is called gravitational potential gradient, that is the rate of change of gravitational potential with respect to distance. Now thus gravitational field at a point is the negative value of gravitational potential gradient at the point. तो ये जो gravitational intensity है at a point, it is the negative value of gravitational potential gradient. I is equal to minus dV by dr. तो वही चीज यहाँ पे बता रखा है, ये मैथमेटिकली जो लिखा है इसी को यहाँ बताया हुआ है कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द पॉइंट. नाउ we'll do two numericals based on this gravitational potential वाला thing. So if you see this question, the distance between Earth and Moon is 3.8 into 10 to the power 8 meter. Determine the gravitational potential energy of Earth-Moon system. Right. Given mass of Earth is 6 into 10 to the power 24 kg, mass of Moon is this, and G is this. So gravitational potential energy So gravitational potential energy
of Earth Moon system so gravitational potential energy of Earth Moon system is U is equal to minus GME by mm upon R. So minus of 6.67 into 10 to the power minus 11. Mass of Earth is 6 into 10 to the power 24 kg. Mass of Moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg divided by R. Distance is 3.8 into 10 to the power 8. Now put these values, calculate करेंगे अगर तो हमारा आ जाएगा 6.67 into 6 into 7.4 divided by 3.8. So 77.93 or 7.79 minus of 7.79 into 10 to the power 24 plus 22 minus 19. 27 और एक और 1 एक और इससे ज़्यादा 10 to the power 28 minus 7.79 into 10 to the power 28 joule. This is the gravitational potential energy. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Next question है gravitational potential difference between the surface of a planet and a point 20 meter above it is 16 joules per kg. So potential difference between surface and 20 meter above it. Calculate the work done in moving a 4 kg body by 8 meter on a slope of 60 degree from the horizontal. So gravitational potential difference gravitational potential difference is equal to 16 joules per kg. हमें निकालना है वर्क डन इन मूविंग अ 4 kg बॉडी बाय 8 मीटर ऑन अ स्लोप ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. So 8 meter from a slope of 60 degree to horizontal. तो ये जो हाइट है ये हाइट कितना लेके जा रहे हैं हम लोग ऊपर. So इसको निकालने के लिए h is equal to 8 sin 60 degree which is equal to 8 root 3 by 2. So that is 4 root 3 हो जाएगा. So h निकल गया, राइट. अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस 16 जूल पर केजी ये 20 मीटर का है. तो ये जो h हाइट तक में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अगर हम लोग निकालेंगे. सो पोटेंशियल डिफरेंस in height h is equal to 16 by 20 potential difference per meter into 4 root 3 meter. So this will be equal to 4 4s are 16, 4 5s are 16 root 3 by 5. 16 divided by 3.2 root 3.
सो पोटेंशियल डिफरेंस हाइट h पे ले जाने में 3.2√3 आ गया. ठीक. नाउ विच इज इक्वल टू वर्क डन. वर्क डन हमने निकाला था पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मास. सो यहाँ पे 3.2√3 इंटू मास हमारा 4 kg है, तो 12.8√3 जूल्स. सो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे 12.8√3, so this is 22.17 joules. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Now, inertial and gravitational masses. So there are two different concepts about the mass of the body as discussed below. दो तरीके का मास होता है, एक इनर्शियल मास हुआ और एक ग्रेविटेशनल मास हो गया. इनर्शियल मास जितना मैटर उसके अंदर है उस वो जो मेजर करते हैं वो इनर्शियल मास होता है. सो इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड is related to its inertia in linear motion and is defined by Newton's second law of motion. So let a body of mass mi move with acceleration a under the action of external force F. According to Newton's second law of motion, force is mass into acceleration. So inertial mass into acceleration is force. So inertial mass will be force by acceleration. Now the mass mi of the body in this sense is the inertial mass of the body. If a is 1, then from equation 34 mi is equal to f हो जाएगा. Thus inertial mass of a body is equal to magnitude of external force required to produce unit acceleration in the body. ठीक है. Required to produce unit acceleration in the body. In fact, inertial mass of a body is the measure of ability of the body to oppose the production of acceleration in its motion along a straight line by external force. So gravity has no effect on inertial mass of a body. So inertial mass किस एक तो जो concept है कितना उसमें matter content है वो inertial mass होता है basically. और वो inertia के so inertia के से related होता है basically. तो where inertia of linear motion से related है. ठीक है. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो लिखते हैं वहां एम आई जो यूज करते हैं दैट इज इनर्शियल मास, फोर्स बाय एक्सेलरेशन. तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शियल मास करोगे, इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इज so inertial mass of a body is proportional to the quantity of matter contained in the body. तो inertial mass क्या है, कितना quantity of matter उस ऑब्जेक्ट के अंदर है. ठीक है, दैट इज द inertial mass. उसके बाद inertial mass of a body is independent of inertial mass of a body is proportional to the quantity of matter contained in the body. It is independent of size, shape and state of the body.
Inertial mass of a body does not depend upon the temperature of the body. So it does not depend on temperature. Fourth is inertial mass of a body is not affected by the presence of or absence of other bodies near it. तो आसपास के bodies के presence या absence से कोई effect नहीं होता है inertial mass पे. Inertial mass is conserved when the two bodies combine physically or chemically. दो body जब physically या chemically combine करता है तो inertial mass क्या होता है, उसको हम कहते हैं कि conserved है. Inertial mass can be added by simple laws of algebra, irrespective of the material of the body. है ना, उसको add, subtract, multiply, divide ये सब कर सकते हैं. Inertial mass of a body increases with velocity of the body. So when a body moves with velocity v, its inertial mass m is given by m is equal to, so ये जो rest mass वाला जो equation होता है, m is equal to m naught by root under 1 minus v square by c square. तो यहाँ पे जैसे जैसे आप v को बढ़ाओगे, स्पीड इंक्रीज करोगे, ये v को इंक्रीज करोगे, तो ये 1 से छोटा क्वांटिटी होता है, डिनोमिनेटर पूरा डिक्रीज करेगा. डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा, मास m नॉट जो है, ये m जो है वो इंक्रीज करेगा. So where m naught is the rest mass of the body and c is the velocity of light in vacuum, the mass m is affected only when the velocity of the body v is comparable with the velocity of light. Now gravitational mass. So gravitational mass of a body is related to gravitational pull on the body and is defined by Newton's law of gravitation. तो ये जो gravitational mass है, right, it is related to gravitational pull. वहां पे कितना मैटर कंटेंट था उस पर डिपेंड कर रहा था, ग्रेविटेशनल मास ग्रेविटेशनल पुल पे डिपेंडेंट है एंड इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वहां पे वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिफाइन हो रहा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे ये फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये जो मास एम जी है ये इसका ग्रेविटेशनल मास है. So if a body of mass mg is placed on the surface of earth of radius r and mass capital N, then gravitational pull on the body is given by F is equal to g mmg by r square. तो mass mg अगर हम लोग निकालेंगे जो gravitational mass है, तो this will be equal to ये जो gm by r square, ये इधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स F डिवाइडेड बाय gm by r square. Okay, so force F divided by gm by r square means F divided by I हो जाएगा, है ना. और I हमारा क्या है, बेसिकली I is intensity, gravitational intensity, intensity of gravitation. So the mass mg of the body in this sense is the gravitational mass of the body. The inertia of the body has no effect on the gravitational mass of the body. Inertia क्या है, इसमें कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है. और if I is equal to 1 कर लेंगे, so if I is equal to 1, then in that case gravitational mass will be equal to the force. So thus gravitational mass of a body is defined as the magnitude of gravitational pull experienced by the body in a gravitational field of unit intensity. The properties of gravitational mass so properties of gravitational mass are the same as those of inertial mass except those mentioned below in the comparison of inertial mass and gravitational mass. तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इनर्शियल मास और कि इसमें क्या डिफरेंस है इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में, सो अगर कंपैरिजन करते हैं, पहला बोथ आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स, दोनों केजी में ही मेजर होगा. बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, बोथ डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड स्टेट ऑफ द बॉडी. Gravitational mass of a body is affected by the presence of other bodies near it, whereas the inertial mass of a body remains unaffected by the presence of other bodies. क्योंकि इसमें gravitation का कोई लेना देना नहीं है, तो inertial mass
आसपास क्या ऑब्जेक्ट रखा हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ग्रेविटेशनल मास डिपेंड करेगा आसपास क्या ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल मास इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस वेर एज इनर्शियल मास इज मेजर्ड बाय इनर्शियल बैलेंस। तो ग्रेविटेशनल मास को हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। तो ये एक स्प्रिंग बैलेंस जैसा एक ऐसा चीज होता है ये, ठीक है। यहाँ पे भी हुक लगा हुआ होता है और यहाँ पे ग्रेजुएशंस होती हैं, और एक एक पॉइंटर होता है जो नीचे की तरफ मूव करता है अगर हम उसको नीचे पुल करते हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग जो मेजर करते हैं वो ग्रेविटेशनल मास होता है। और जो हमारा इनर्शियल बैलेंस एक है, उस इनर्शियल बैलेंस से जो हम मेजर करते हैं वो इनर्शियल मास आता है। नाउ बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये जो ग्रेविटेशनल और इनर्शियल मास हम लोग के लेवल पे वो दोनों बराबर ही। It means that gravitational mass of a body is proportional to its inertial mass. In fact, inertial and gravitational masses of a body are identical. Now, center of gravity. So, center of gravity of a body. So, center of gravity of a body placed in the gravitational field is that point where the net gravitational force of the field acts. तो वो पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट में जहां पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं उस पर्टिकुलर बॉडी का। सैटेलाइट अब हम लोग देखेंगे। सैटेलाइट क्या है? अ सैटेलाइट इज अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली इन एन ऑर्बिट अराउंड अ कंपेरेटिवली मच लार्जर बॉडी। किसी बड़े ऑब्जेक्ट के अबाउट अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा तो वो छोटा ऑब्जेक्ट उस बड़े ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। उसी तरह मून इन टर्न इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। In our solar system, each planet is a satellite of sun, but some of these planets have got satellites around them as well. The planet Jupiter and Saturn have 63 and 62 satellites called moons respectively. Since all these satellites were made by nature, these are called natural satellites. With the advancement of science and technology in 1950, since 1957, many man-made satellites have been put in different orbits around Earth. Such satellites are called artificial satellites. तो जो man-made satellites हैं, उनको हम लोग artificial satellites कहते हैं। Now, principle of launching a satellite, right? So consider a very high tower on the surface of Earth, whose height is more than the height of अर्थ एटमॉस्फेयर। तो हम लोग एक बहुत बड़ा एक टावर कंसिडर करते हैं, है ना, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बड़ा, इतना बड़ा टावर कंसिडर करें, मतलब फिक्शियस है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको समझने के लिए बस हम लोग कर रहे हैं। Let a body be projected from top of this tower with some horizontal speed. The body will describe a parabolic path under the effect of gravity and hit the surface of Earth at point A1. हम लोग किसी इसको भेजते हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड से, ये इधर आएगा और यहाँ आके गिर जाएगा A1 पे। और ज्यादा स्पीड देंगे तो थोड़ा डिस्टेंस पे आके A2 पे गिरेगा, और ज्यादा स्पीड देंगे तो A3 पे गिरेगा, और इससे भी ज्यादा स्पीड दे दिया तो ये बेसिकली कहीं पे इसको अर्थ मिलेगा ही नहीं। ये हर जगह जो है ना, ये ऐसा घूमता रहेगा हमेशा, मतलब अर्थ पे हमेशा फ्री फॉल होता रहेगा कि अर्थ की तरफ जा रहा है, बट अर्थ के पास कभी नहीं पहुंचेगा। So if the horizontal speed of projection of the body is increased, then the body will hit the surface of Earth at point A2, farther from the foot of the tower. Clearly, the horizontal range in
Second case is much more than that in the first case. Now if we go on increasing the initial horizontal speed, अगर हम लोग horizontal speed को बढ़ाते जाएं, so if we go on increasing the horizontal speed of projection of the body, its horizontal range will also increase, and finally a stage will come when the body will not hit the earth. मान लो तुमने इतना ज्यादा इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया कि ये आता तो है पैराबोलिक पाथ में, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इट विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ अर्थ, जबकि बल्कि ये आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ता रहेगा, और ये हमेशा अर्थ की तरफ आना चाहेगा, बट इट विल नेवर बी एबल टू रीच द अर्थ. ठीक है. So but will always be in a state of free fall. So the body will not hit the earth, but will always be in the state of free fall under gravity in an attempt to fall to earth. So then the body will describe a stable circular path around the earth and become a satellite of earth. The minimum speed required, so minimum speed required to put the satellite into its orbit around the earth is called orbital speed of satellite. Okay. So जो minimum speed required है to put the satellite into the orbit of the earth is called orbital speed of satellite. मतलब ये जो स्पीड जितना दिया जिससे ये टकराएगा नहीं बल्कि गोल गोल ऑर्बिट में घूमेगा, मिनिमम स्पीड जो चाहिए उसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं सैटेलाइट. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग ये एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे ऑर्बिटल स्पीड का, टाइम पीरियड का और हाइट ऑफ सैटेलाइट का. सो पहला है ऑर्बिटल स्पीड. सो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू अ गिवन ऑर्बिट अराउंड अर्थ. तो कम से कम कितना स्पीड हम लोग दें कि वो एक ऑर्बिट में चला जाए, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल स्पीड. द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, the value of orbital speed is different for different orbits around earth and is independent of मास ऑफ सैटेलाइट. मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा कि कितने डिस्टेंस पे हम लोगों को, है ना, कितने डिस्टेंस पे हम लोगों को ये ऑर्बिट में डालना है, मतलब ऑर्बिट को कितने डिस्टेंस पे रखना है. लेट m इज द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे देखिए r is the radius of earth, capital M is the mass of earth, small m is the mass of satellite. तो ये जो है small m is the mass of satellite, v is the orbital speed of the satellite. तो किसी भी मोमेंट पे जो ऑर्बिटल स्पीड है, this is equal to v. So v is the orbital speed of the satellite, h is height of satellite above the surface of earth. तो ये जो h है, this is the height of satellite above the surface of earth. यहाँ पे सैटेलाइट का हाइट सरफेस से कितनी हाइट पे रहेगा वो हम लोगों ने निकाल लिया. सो स्मॉल r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट. तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस ऑफ h. ठीक है, जितना इसका ऑर्बिट का हाइट है. सो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h. The centripetal force required to keep the satellite in the orbit is, तो इस सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कराने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, दैट इज इक्वल टू mv²/r. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gravitational pull acting on the satellite is equal to g/m/r². ठीक है. सो ग्रेविटेशनल पुल g/m/r² है ना. Now in equilibrium, the gravitational pull provides the required centripetal force to the satellite. तो जो gravitational pull है, तुम ये देखो कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, so the centripetal force provides this gravitational force. So centripetal force is mv²/r, so that will provide this gravitational force, that is g/m/r².
सो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू gmm बाय r स्क्वायर, ये जो रिलेशन है इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये देखिए, पहले तो मास और मास दोनों कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल और स्मॉल, स्मॉल आर, स्मॉल एम और स्मॉल एम, स्मॉल आर एक स्मॉल आर से कैंसिल होगा, एक आर बचेगा, वी स्क्वायर इज जी एम बाय आर और वी इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम बाय आर। सो ये होता है ऑर्बिटल स्पीड। सो ऑर्बिटल स्पीड v is equal to root under gm upon r. ठीक है। So if small g is the value of acceleration due to gravity on the surface of earth and we know that small g is equal to gm by r square, so gm क्या हो जाएगा, g into r square हो गया। अब हम लोग इस gm के जगह g r square पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा r वैल्यू हो जाएगा, r बाहर आ जाएगा, r is equal to g times root under r plus h. It is clear from 40 that orbital speed of a satellite. तो ये जो इक्वेशन है इससे हम लोग को क्या क्या मिलता है, सो इससे हम लोग को मिलता है कि द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो यहाँ पे देखो ऑर्बिटल स्पीड जो है इसमें कहीं पे भी मास ऑफ सैटेलाइट यहाँ पे नहीं है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। सेकेंड, डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और इंक्रीजेज इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो अगर रेडियस इंक्रीज करेंगे, स्मॉल आर अगर इंक्रीज करते हैं बेसिकली, तो स्मॉल आर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। थर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ planet around which the revolution of satellite is taking place. The direction of orbital speed of a satellite at an instant is along the tangent to the orbital path of the satellite at that instant. So orbital speed का direction निकालना है तो it is along the tangent to the orbital path of the satellite at that instant. So when a satellite is orbiting very close to the surface of earth, in that case h is very very less than r, so in that case small r is replaced by capital R and v is equal to v naught. तो जो ऑर्बिटल स्पीड जो होगा दैट इज रूट अंडर r बाय, सो इज इक्वल टू r इंटू रूट अंडर g बाय r है, ये जो हम लोगों ने यहाँ डिराइव किया था। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा तो r इंटू जी बाय आर प्लस एच है, h बहुत छोटा है तो ये हट जाएगा, r बाय रूट अंडर जी, तो ये जो है रूट अंडर जी आर हो जाता है इसका वैल्यू। सो जो ऑर्बिटल स्पीड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज रूट अंडर जी आर। सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ g एंड r एज 6.4 इंटू अर्थ के लिए अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं g का वैल्यू 9.8 और r का वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अगर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो जो ऑर्बिटल स्पीड का वैल्यू निकल के आएगा दैट इज 7.92 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, सो विच इज 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये डिराइव करना भी आता है काफी। Now, time period of satellite. So it is the time taken by a satellite to complete one revolution around the earth and is denoted by capital T. तो ये जो time period है इसको this is denoted by capital T and वो है क्या, time taken to cover one revolution around the earth, right? तो distance traveled in one revolution क्या होता है, 2 pi r होता है जो circumference हो जाएगा उसके orbit का, तो 2 pi r, r रेडियस है उसके ऑर्बिट का, डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी v हो गया, सो 2 pi r, ठीक है, बाय रूट अंडर जी आर होता है,
रूट अंडर जी आर और ऊपर आर, राइट। तो ये आर, इसको आर को अंदर लेके जाएंगे तो ये आर क्यूब बाय जी हो जाएगा। सो 2 पाई बाय कैपिटल आर इंटू आर क्यूब बाय जी। 2 पाई बाय कैपिटल आर ये हो गया, और ये स्मॉल आर को हम लोग आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी ऐसा लिखते हैं। So if the Earth is supposed to be a sphere of mean density rho, then mass of the Earth is given by, so m is equal to 4 by 3 pi r cube into rho हो गया, right? So this is the, हाँ जी बेटा बताओ, कुछ पूछना है क्या? सो मास जो है दिस इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, राइट। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो गया और डेंसिटी हमारा रो हो गया। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो कर देंगे तो हम लोग को मास निकल के आ गया। सो अब अगर हम लोग को स्मॉल जी लिखना है, हमें पता है जी एम बाय आर स्क्वायर है स्मॉल जी, और जी बाय आर स्क्वायर कैपिटल एम की जगह हम लोग ये 4/3 पाई आर क्यूब रो डाल देंगे डेंसिटी के टर्म्स में। तो 4 पाई जी आर रो डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा जी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ जी, तो ये जो हमारा इक्वेशन था, ये इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, जी के जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 पाई बाय आर, और ये आर प्लस एच क्यूब, ये जो 4 पाई जी आर रो बाय 3 था, तो 4 पाई जी आर रो डिनोमिनेटर में और 3 ऊपर चला गया, और 2 पाई बाय आर को अंदर लेके आ जाएंगे तो 4 पाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 3 टाइम्स r प्लस एच होल क्यूब एंड 4 पाई जी आर इंटू रो। अब ये देखिए यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, एक पाई कैंसिल हो गया, राइट। तो ये हो गया 3 पाई r प्लस एच का होल क्यूब, और अंदर बच गया जी रो और आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब बन गया जी रो इंटू आर क्यूब। So for satellite orbiting close to the surface of Earth, H is, H is very very less than R. So H plus R will be approximately equal to small r. ठीक है। So ये हमारा टाइम पीरियड का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन, अच्छा इसमें वैल्यूज अगर हम लोग पुट कर लेते हैं, फॉर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, उस केस में H इज वेरी वेरी लेस देन R, और H प्लस R क्या होगा, R से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का H प्लस R को R से रिप्लेस, तो R क्यूब कट गया, 3 पाई बाय 0 हो गया। इन सब में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो T इज इक्वल टू ये 2 पाई बाय R r³ बाय g, अगर ये 42 से तो ये आया, और 41 वाले इक्वेशन में अगर R प्लस एच को आर से रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे 2 पाई√अंडर r/g हो जाता है। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, r के जगह जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो डाल देंगे, और g के जगह 9.8 पुट कर लेंगे, तो वी गेट द वैल्यू टाइम पीरियड एज 84.6 मिनट्स। तो जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ टाइम पीरियड जो है एक सैटेलाइट का, दैट इज इक्वल टू 84.6 मिनट्स, राइट। और इसके पहले वाले में जो हम लोग कैलकुलेट किए थे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो हमने ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट किया था 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ सैटेलाइट, चलो इसको, ये 3-4 चीज रह गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा ये ग्रेविटेशन, एस्केप स्पीड वगैरह थोड़ा सा बाकी है, so you'll be able to finish it in the next class, right?